Sairam. So what we were discussing about banking services, you know, and we discussed the main functions of a commercial bank. We are discussing. So we have already discussed first two primary functions of commercial banks, which were acceptance of deposits and granting of loans. Uh, Then third function we discussed that bank provides the facility of collection of checks. So we receive checks from different customers which belong to different banks. Then we simply have to deposit these checks of different banks in our own bank, and our bank will collect the money, and this money will be deposited by our bank in our bank account. So we don't have to go to different banks for collecting the money of the checks which we received from different customers. Fourth facility of function of commercial bank is remittance of funds or transfer of funds. So commercial banks help in transferring the money, transfer of funds from one place to the other place. The most traditional method of transfer of funds by commercial banks is a bank draft. No? So bank draft, can any of you define bank draft, or do you know what is this bank draft? One term we have discussed, that is bank overdraft. No, that is not bank overdraft. Here we are discussing about bank draft. So do you know this bank draft? Any of you have seen this bank draft? Sairam? Okay. So bank draft is a mode of transfer of money, from one place to the other place. So what is the definition of bank draft? Bank draft is an order by a branch of the bank to the other branch. It's an order by a branch of the bank to the other branch to pay a specific sum of money to a specific person for which value has been received. No, means what? Suppose I want to send 50,000 rupees to someone at Gwalior. So what can I do? Nowadays we have many modes of transfer, so don't go for them. First, let us discuss this mode. So traditionally, what I had to do, I will go to the bank and I will fill a slip. That is called transfer slip or DD slip, demand draft. देखो bank draft or demand draft. It is payable on demand. That's what is called demand draft. So I have to fill a slip. अभी भी कर सकते हैं, अभी भेज सकते हैं इससे. So then I have to go to the bank, है ना, and I have to fill the slip, and in that slip I have to mention my name, my account number, okay, and amount I want to transfer, and the name of the person to whom I want to transfer the money, है ना, इन फेवर ऑफ whom, ड्रॉन इन फेवर ऑफ whom, किसको पैसा ट्रांसफर करना, उसका नाम, एड्रेस, वो सब उसमें लिखना है बैंक में, स्लिप में. एंड आफ्टर साइनिंग एंड अलोंग विद मनी, आपको 50,000 रुपये ट्रांसफर करने, तो 50,000 रुपीज प्लस सम डीडी चार्जेस, बैंक कुछ चार्ज लेता है उसके लिए, बैंक चार्जेस या डिमांड ड्राफ्ट चार्जेस, दैट यू हैव टू डिपॉजिट इन द कैश काउंटर ऑफ द बैंक. जहाँ कैश लेते हैं वहां जमा करना है. अभी वो कैश में नहीं बनाते हैं, तो आपको अपना एक चेक देना है, उतने का बैंक आपको डीडी बनाना है. तो वो बैंक का आपको एक डॉक्यूमेंट बना के देगा, दैट इज कॉल्ड डिमांड ड्राफ्ट, है ना, दिस इज कॉल्ड डिमांड ड्राफ्ट, डीडी. In that all these details will be mentioned, how much money you are going to transfer, to whom you are going to transfer. So you will send that DD, आपको मिल जाएगा DD. उसको मिलने के बाद आप क्या करेंगे, you send it to the person by post. उसके पास आप बाई पोस्ट भेज दीजिए, इसके पास आपको पैसा ट्रांसफर करना है, एंड दैट पर्सन विल गो टू द ब्रांच ऑफ बैंक. जैसे आपने एसबीआई से लिया, तो एसबीआई में जाएगा वहां पर ब्रांच में, और वो पैसा वहां से ले लेगा. एसबीआई विल पे दैट मनी टू दैट पर्सन. So that is called bank draft. It's a order by one branch of a bank to the other branch. बैंक की एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को ऑर्डर देती है कि इतना पैसा इस आदमी को दे दो, और विच वी हैव ऑलरेडी रिसीव द मनी फ्रॉम दिस पर्सन, है ना. सो दैट इज कॉल्ड बैंक ड्राफ्ट फैसिलिटी, दैट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस. ओके. नाउअडेज मैनी फैसिलिटीज, अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में. तो नाउअडेज मैनी मोड्स ऑफ ट्रांसफर आर बीइंग डेवलप. अभी तो बहुत आसान हो गया ट्रांसफर करना. Immediately you can transfer.
by using many methods are available nowadays for transfer of money, but that bank draft facility is also available, that also can be utilized. Sairam, Sairam, am I there or not? Yes, sir. Yes, sir. So let us share the screen. Let us see. And last one is the allied services. In addition to these facilities, banks also provide some more services to the customers. They are locker facility. Have you listened about locker facility? You can hire a locker in a bank, है ना? So you can keep your valuables, jewelry safe in the bank. तो घर पे चोरी होने का डर है, कोई सामान लेके चले जाएगा, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स हैं. So you can hire a locker in the bank at a nominal rent charged by the bank. बैंक उसका कुछ किराया लेता है. तो लॉकर इज सेफ बिकॉज इट नीड्स टू कीज, है ना? लॉकर को खोलने के लिए दो चाबी चाहिए. So one key is with the bank and one key is with the customer. So until both the keys are inserted, that locker cannot be opened. तो लॉकर कोई खोल नहीं सकता जब तक आपकी वाली की भी बैंक के पास नहीं होगी तब तक. दैट्स ए सेफ प्लेस टू कीप योर वैल्यूएबल्स, है ना, सेफ फ्रॉम एनी टाइप ऑफ रिस्क. So that locker facility is provided by bank to the customers. Then bank also provide the facility of making payments on behalf of customers. आपकी स्कूल की फीस जमा करना है या कोई और पेमेंट करनी है, तो यू कैन गिव a standing order to the customer bank. Customers can give the standing order to the bank, and according to the standing order, bank make payment of expenses on your behalf. स्कूल फीस जमा करना है, इंश्योरेंस की प्रीमियम जमा करना है, that payments will be made by bank on your behalf, है ना? So you have to inform to the bank that this amount at this time on this date you have to deposit. Bank will deposit. बैंक क्या करेगा? बैंक डिपॉजिट करने नहीं जाएगा. बैंक हैज अकाउंट ऑफ दैट कंपनी और दैट ऑफिस ऑल्सो एंड योर अकाउंट ऑल्सो. जैसे स्कूल फीस जमा करने का इंस्ट्रक्शन है बैंक के पास, तो बैंक में स्कूल का अकाउंट भी है और आपका अकाउंट भी है. तो बैंक विल डू व्हाट? बैंक विल डेबिट योर अकाउंट and will credit the account of the school, and that amount will be transferred to the school's account from your account. So that way bank makes the payment on behalf of the customers. पहले बैंक एक ट्रेवलर चेक देता था, अब तो उसकी जरूरत ही खत्म हो गई है, जरूरत ही नहीं है. तो जो लोग घूमने जाते थे तो वो एक साथ कैश नहीं ले आते, तो उसमें ट्रेवलर चेक में होता है कि डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट डेट्स पे आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते थे. तो जब आपको जर्नी प्लान के हिसाब से आप डेट उसमें प्लान करते हैं, एंड यू कुड हैव गॉट द अमाउंट. ओके, so that is the traveler's check. Now it is useless. Traveler's check, no need we have ATM card, so we can withdraw money at any place. And bank also provide the facility of underwriting, है ना, underwriting services for shares or debentures. तो अगर आपको शेयर या डिवेंचर्स खरीदने किसी कंपनी के, तो बैंक विल प्रोवाइड दिस अंडरराइटिंग सर्विस. आजकल बैंक में एक और आ गया नया इलेक्ट्रॉनिक मोड में डीमैट अकाउंट, है ना. यू कैन ओपन द डीमैट अकाउंट इन मेनी बैंक्स. दैट सर्विसेज आर आल्सो प्रोवाइडेड बाय commercial banks. So these are the main functions of commercial banks. Core functions are two: accepting of deposits and granting of loans. Then bank provides check facility. Then bank provides the facility of transfer of funds from one place to other place. Traditionally, we discuss now by bank draft. Modern methods we will discuss later. Abhi. And allied services. Many more services are provided by commercial banks to the customers. Now let us see what else we can do here. इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और ई बैंकिंग, है ना. नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और ई बैंकिंग. नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस वीडियो और व्हाट इज हियर. आई डोंट नो. इट्स शायद आई थिंक notes are here. So this we have discussed definition of banking, types of banks we have discussed: commercial, cooperative, specialized, central bank, functions of commercial banks, primary and secondary. Now this topic we have to discuss, that is the benefits of e-banking and meaning of e-banking. Electronic banking, this we have discussed. Bank definition we have discussed. Okay, features of bank, need for banking, types of banks, this we have discussed: central bank, commercial bank, cooperative bank, specialized banks, you know. Functions of commercial bank, this we have just completed. This accepting of deposits and granting of loans are two primary functions. Secondary में agency functions, when bank work as agent of the customer. And utility function that we discuss, locker facility or transfer of money, that is the, these are the two. Granting of loans, this we have discussed method of accepting deposits by opening of these four accounts: fixed deposit, savings, current and recurring. Methods of granting loans also we have discussed: term loan, cash credit, overdraft,
discounting of trade bill and consumer credit or credit cards. And secondary function में दिया आपने collection of the check, interest और dividend, है ना, standing order जो भी बताया आपको, payment of school fees और payment of insurance premium, purchase of securities, that वो बताया अभी आपको, underwriting services, है ना, and transfer of fund, that is through bank draft. Utility services, they are very useful for common person, provide locker facility, accept bill and underwriting of shares and debentures, provide customers information, and assist in foreign trade by dealing in foreign exchange. It is not a common function for a common man, but you can get your money exchange by exchange bank. Traveler check बताया था मैंने आपको, ना अब इसकी जरूरत नहीं है. It is what we say, out of date हो गया. Support stock exchange, stock investment, these are the services. अब जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेट बैंकिंग और ई बैंकिंग. दिस इज द टॉपिक. इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Sairam. Yes. Yes, Now sir. this banking is very Yes, sir. popular and very useful. You all must know this method. Very practical and very useful for each and every person. So internet banking or e-banking or electronic banking means conducting banking transaction using internet services. है ना? That is called e-banking. E-banking means electronic banking. So when we conduct banking transactions by using internet, है ना, that is considered as internet banking or e-banking. So main element in e-banking is what? What is the main element in e-banking or electronic banking? That is the Sairam. The No, transactions are made by using internet. This is internet. internet. है ना? Internet is the main element that makes a difference. है ना? So what is the most important element that is needed for e-banking? That is the internet or internet connectivity. So when we conduct any of the banking transactions by using internet services, that is called as e-banking. Many of services you already know. We have already discussed during this course or discussion. ATM card, debit card, credit card, है ना? These are the or net banking services. These all are the part of the e-banking services. In all these services, we use internet services. Without internet, all these services cannot function. है ना? So that's why it is called as e-banking or net banking or internet banking. It says most bank allow you to perform numerous banking transactions online. क्या क्या? Some account access your bank account to check the balance and to print account statement. This you can do. This we will discuss. Transfer of money from one account to another account, payment of goods or services purchased online. है ना? We will discuss about all this. ठीक है? So let us come back. तो दिस एक्सेस, अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप अपना अकाउंट खोल के आप उसको चेक कर सकते हो कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ माय अकाउंट निकाल सकते हो, कितना पेमेंट किया, कितना डिपॉजिट किया. दैट ऑल यू कैन चेक बाय योर ओन विदाउट गोइंग टू द बैंक ऑफिस. है ना? अब आपको बैंक ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है. ट्रांसफर ऑफ मनी कर सकते हो फ्रॉम वन अकाउंट टू अदर अकाउंट. मैंने पहले ही बताया था आपको, है ना? नेट बैंकिंग से आप ट्रांसफर कर सकते हो किसी को भी. ओनली यू नीड दैट द अकाउंट नंबर ऑफ दैट पर्सन, इज बैंक नेम एंड IFSC कोड. है ना? ये वर्ड यूज कर लिख लो कहीं पर आप, IFSC कोड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कोड दैट वी नीड इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और ई बैंकिंग. IFSC कोड हम डिस्कस करेंगे इसको. IFSC कोड, ठीक है. एंड पे फॉर गुड्स और सर्विसेज परचेज ऑनलाइन. तो आप देखते हो, अभी आपने ऑनलाइन शॉपिंग किया ना, उसके लिए पेमेंट कैसे करते हो? या तो COD करोगे, कैश ऑन डिलीवरी, या फिर क्या करते हैं आप उसके लिए? हाउ डू वी मेक पेमेंट फॉर ऑनलाइन शॉपिंग? Net banking. हाँ, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, करते हैं ना आप लोग उसके लिए. दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ द ई बैंकिंग. ई बैंकिंग इज ए banking service provided or banking transactions conducted using electronic banking or using internet. So all these are called as e-banking or electronic banking. Nowadays this has become very popular and very common to each and every person. So now what are the benefits of e-banking? So it has given in a different way. I am reading or I am explaining you from NCERT's point of view. So e-banking is beneficial to both. Try to understand. E-banking is beneficial to both. To both means
It is beneficial to customers as well as to the bank also, है ना? So electronic banking is beneficial to both to the customers and to the bank. So first, can you identify some of the advantages or benefits of e-banking to customers? If you can identify, please try to identify. क्या क्या बेनिफिट हुआ ई बैंकिंग से? हाँ, प्रैक्टिकल बताना आपको, बुक का पढ़ के मत बोलो, रियल में जो आपको क्या लगते हैं, क्या क्या बेनिफिट हुए इससे? हाँ बोलिए प्लीज। Sir, it is easy to use. इजी टू यूज, ओके ठीक है। दूसरा बोलो कोई। सर टाइम कम लगता है। provides us 24 hours. सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि नाउ बैंकिंग सर्विसेज आर अवेलेबल, दिस इज द बेनिफिट टू द कस्टमर, है ना? आई एम डिस्कसिंग अबाउट बेनिफिट टू द कस्टमर्स। So it is available 24/7. Okay. Banking services are available 24/7. है ना? Means at any time you can conduct banking transaction. कैसे होता है? कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बताएंगे इसका? 24/, मैं डिस्कस किया आपको पहले इससे। How is it possible to have banking facility 24/7? Any one facility you can give example? ATM. Sir, Yono SBI. योनो एसबीआई। और कोई? Sir, Paytm. ATM facility. पेटीएम Sir, प्लस। फोन पे। Sir, Phone Pay. Okay, okay. Sir, Google Pay. I'm not asking only payment systems. I am asking banking service. So most important service that is available for 24/7, that is the ATM facility. ATM facility. No, I'm not asking only payment. All these are available, but most important facility is available. That is ATM booth. है ना? Also ATM के आने से पहले अगर आपको बैंक से पैसा निकालना तो क्या करना पड़ता था? You had to go to the bank, है ना? And बैंक कब जा सकते थे? Within the working hours of the bank. 10:30 to 3:30 or 4 p.m. Up to that time only banking services were available, or you were allowed to withdraw money from your account, है ना? वहां भी जाके स्लिप भरना, उसके बाद फिर क्यू में लगना. It takes a lot of time sometimes. In the cities it was very long. There were very long queues, है ना? I can remember then when I was in 11th or commerce BCom classes. I used to go to the bank and there was a pension day. 1st to 3rd, 1 से 3 तारीख तक पेंशन मिलती थी लोगों को। जिस बैंक में अकाउंट था उसमें पैसा निकालने के लिए जाते तो मालूम चलता है कि पेंशन वालों की भीड़ बैंक के ब्रांच से रोड तक आ गई है। 50, 60, 70, 80% are there in the queue, and your turn will come after 80%. So you have to wait for 3-4 hours to withdraw money. Okay, that was a scene. But now what happened? Do we need to go to the bank for withdrawing money? अब बैंक में नहीं जाना तो दो ओपन, कब बैंक खुलेगा? या डोंट फियर दैट बैंक इज क्लोज नाउ, हाउ कैन आई विथड्रॉ? एनी टाइम यू कैन विजिट नियरली ATM booth and you can withdraw money, maybe in the night or in the day. Even you can withdraw money from ATM machines of other banks also, है ना? तो वहाँ that facility is available. तो बैंक कस्टमर को फायदा क्या हुआ? 24/7 दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल। ट्रांसफर करना पैसा तो आप बैंक जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो बैंक का एक्सेस ऑफ बैंक हैज बीन इंक्रीज, है ना? Access of banking services has become easy and what we say, it is widened, है ना? Now banking services or bank has reached in everyone's house. वो एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, बैंक नाउ इज इन योर पॉकेट। पता है कि आपने सुना होगा, एडवर्टाइजमेंट आता है, नाउ द बैंक इज इन योर पॉकेट। इफ यू हैव स्मार्टफोन and internet banking or any app you have downloaded, then you can avail all banking services, banking facilities by using your mobile phone only, है ना? So that much convenience is there. So a lot of convenience is there to the customers. Banking services are available 24/7. Customers don't have to waste their time for going for the long distances from their homes to the bank branches, and they don't have to wait. They don't have to queue in the bank offices, make the queues. So that time is being saved, है ना? Second, important is there no holidays, no 365 days, 24/7. These services are available. Okay, some of the transactions you can conduct by sitting at your home. You don't need to go to the bank office. Like you want to apply for the loan, you want to transfer money, you want to make payment to someone. That all transactions you can do by sitting at your home. You don't have to go to the bank office for doing all these transactions. Now you immediately you can see what is the balance in my account.
after making every transaction. So that makes you financially sensitive. That brings a financial discipline in the mind of the customers. So they can control their expenses by knowing that how much amount I have already paid and what are the balances left in my account. And it gives a lot of satisfaction to the customers because banking services are not limited to the walls of the bank and a branch of the bank, but banking services are available at your home only, or in your pocket. So that gives a lot of satisfaction. It saves time of the customers. It is more convenient for the customers to use banking facilities, and it is one more aspect I would like to mention. All these facilities, electronic banking uh, has reduced the risk of carrying the cash. Now you don't have to carry the cash. Customer don't need to carry the cash with them. They only need to carry some plastic money, that a debit card or credit card with them. So that risk has been reduced by these e-banking services or e-banking facilities. Ram, is it clear? Yes, sir. Now it is beneficial to the banks also. What is the benefit to the bank? First one, what I said earlier, there was a huge crowd in the bank branches, and banks had to maintain many counters for conducting these huge transactions. Many counters for deposits of cash, many counters for withdrawal of money, because there were a huge rush in the banks. So they had to manage all this crowd. So for that they have to open many counters, and for that they needed a lot of employees. Large number of employees were needed. So because of this electronic banking, what happened? Number one, the crowd in the bank branches has been reduced, and burden on the bank branches has been reduced, substantially reduced. Now people don't like to go to the bank, and a very less number of people go to the bank only for those activities, those work which cannot be done online. It has been reduced the need of employee, number of employees has been reduced, है ना? तो जितने employees की जरूरत पड़ती थी बैंक को, employee की जरूरत कम हो गई है, so it has reduced the expenses of the bank. ठीक है?
7 sir. है ना? So e-banking is beneficial to both. It is beneficial to the customers because customers can avail banking facilities 24/7 and 365 days. All the days banking services are available. There is no holiday now. Even banks are closed, you can still avail the banking services. It gives a lot of convenience. It saves a lot of time of the customers. They don't have to go to the branches of the bank, but by sitting at home or while traveling, they can conduct banking transactions. They can transfer the money, can check their balances, okay, can make the payment of the bills, okay, by sitting at the home. So they don't have to go to electricity office or they don't have to go for recharge of their mobile phones or digital TV. They can all do by sitting at their home. देखा आपने सारी चीजें, वो एडवर्टाइजमेंट भी आता है घर बैठे बैठे, उसमें सारे काम कर दिए, पेटीएम है तो फलाना, दिस पेमेंट मोड इज देयर, दैट ऑल कैन बी डन. So that is the advantage of banking services. Now customers can check, can have up-to-date information about their account. Anytime they can check their accounts. They can authenticate the transactions, whether this transaction is made by me or not. Immediately they can see, and it develops a financial discipline among the customers because they have a close watch on their balances. Okay, that all can be done by the customers. It is beneficial to the banks because banks burden on the bank branches has been reduced. Now less number of customers visit the bank branches, so burden of the branches has been reduced. Subsequently, banks staff requirements has been reduced, so that saves a lot of cost of the banking. You know. Then access of banking facilities is more now. Bank is not limited up to the four walls, but bank has reached in everyone's house. If someone has a smartphone or PC, personal computer, and internet connection, they can use banking services. So they don't wait for going to the bank. And I was discussing it gives competitive advantage to the commercial banks. But nowadays, this competitive advantage is no more because every bank is providing all these facilities, all these services. If any one bank has these facilities, or few banks have these facilities, services, but other banks do not have, then it is a competitive advantage. But nowadays, we see every bank is providing all these services. That's why that competitive advantage is not there. Okay. So now these are the advantage and disadvantage. But now what digital banking or this net banking we are using, common instruments of this net banking or internet banking are, first is the most important that we are dealing with is the ATM. You know? One day we have already discussed full form of ATM. What is the meaning of ATM? Automated teller machine. Automatic teller machine. What is the automatic teller machine. Okay. So in this machine, by using internet to your account, है ना? Whatever transactions we make using ATM machine, means whatever withdrawals we make from ATM machine, or we can transfer funds also by using ATM card. So whatever money we are using, withdrawing or transferring, that is recorded in our account electronically. So all these ATM machines are the example of electronic banking because they are electronically connected or connected by net. You know? So now these basically invention of ATM machines is on the basis of vending machines. In some of the Western countries, first of all, they develop vending machines. Have you seen the vending machines? Now in India also we can find vending machines on railway stations, or if you go to the Indore, that bus service in on the what stoppage बने हैं जहाँ पर, है ना? क्या है उसका? सिटी सर्विस है क्या इंदौर में बस चलती है? वहाँ क्या है? कॉइन ऑपरेटेड मशीन्स लगाई हैं उन्होंने, है ना? So you have to insert a coin and you can purchase chocolate or cold drink or some items are there in the machine. So according to you can get some coin operated machines are there, है ना? किसी ने देखा हो रेलवे स्टेशन पे होती थी वेट मशीन, पता है कि आपको, किसी ने देखा है? उसमें होता था कि 1 रुपये कॉइन डालो और खड़े हो जाओ उसके ऊपर, तो आपकी एक वेट स्लिप निकल के आती थी, जो 99% गलत भी होता था वेट, Yes sir. है ना? Yes sir. वो वेट मशीन, वो उसका Yes, sir. ओल्ड फॉर्मेट है इसका, उसको इम्प्रोवाइज करके बनाया
ये वेंडिंग मशीन्स और ये आपका एटीएम मशीन्स है ना। तो दीज आर द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ दीज ओल्ड मशीन्स। तो वो जो वेट मशीन जो होती थी रेलवे स्टेशन में, वो तो 99% तो क्या होता था, खराब ही होती थी। लोग कॉइन डालते तो कुछ भी नहीं आता, और कई बार आता भी तो एक स्लिप निकल के आती है, उसमें एक साइड में आपका लिखा रहता कैसा डे है, गुड डे और बैड डे क्या है आपका, और दूसरी साइड आपका वेट लिखा रहता था। तो दैट वाज वेरी अनऑथेंटिक, है ना, कोई उसको रियलिटी से कोई, बट दे गिव सम वेट। Later on, they developed vending machines in Western countries, where they use vending machines for selling high-demand customer products like chocolates, कुरकुरे, chips. These are filled in the machine. ये सब मशीन के अंदर होता है। हमारे इंडिया में भी कई जगह जाएंगे तो आप, एंड प्राइस लिस्ट इज पेस्टेड ओवर द मशीन। उस मशीन के बाहर एक प्राइस लिस्ट लगी रहती है कि ये चीज खरीदना तो कितने रुपए आपको डालने हैं, कॉइन और नोट। अब तो नोट ऑपरेटेड भी आ गई। अर्लियर इट वाज ओनली कॉइन ऑपरेटेड, बट नाउ तो उस पर एक कोड नंबर होता है। तो जैसे वहां लिखा है कैडबरी डेरी मिल्क लिखा है उस पर, और उसकी प्राइस है 20 रुपीज। तो मैंने 20 रुपीज का नोट इंसर्ट किया मशीन में, और उसका जो कोड है वो वाली की क्लिक किया, मशीन के ऊपर एक कोड की है उसको क्लिक किया, देन आई विल गेट ए कैडबरी डेरी मिल्क, दैट मशीन विल गिव मी ए कैडबरी डेरी मिल्क, है ना। तो विदाउट एनी सेल्समैन, दीज हाई डिमांड लो प्राइस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर सोल्ड बाय दीज वेंडिंग मशीन्स। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो ऐसे कई जगह वेंडिंग मशीन्स लगाई हैं, तो सुबह शाम वो आके उसको मशीन में फिल कर देते हैं और सामान डाल देते हैं, और जब खत्म हो जाता है तो और भरते जाते हैं उसको। सेम सिस्टम इज अडॉप्टेड बाय एटीएम मशीन्स। तो इन प्लेस ऑफ दीज आइटम्स नाउ वी व्हाट वी पुट इन द एटीएम मशीन, नोट्स, है ना। एटीएम मशीन के अंदर क्या डालते हैं, नोट्स डालते हैं। तो व्हेन ए कस्टमर कम्स एंड मेक्स ए ट्रांजेक्शन, तो क्या करना है आपको एटीएम में, इट इज डेबिट कार्ड लिखा होगा आपने, उस पर क्या लिखा था, एटीएम कम डेबिट कार्ड। हैव यू रेड दिस कार्ड? देखा ना कार्ड आपने? एटीएम का दूसरा नाम क्या है, डेबिट कार्ड है, सही राम? Yes, sir. तो Yes, वन sir. इज, है ना। तो एक एक आपने पढ़ा क्रेडिट कार्ड। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड? दोनों में क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में? सर डेबिट कार्ड हम एटीएम से पैसा निकालने के लिए यूज़ करते हैं, और क्रेडिट कार्ड कोई भी शॉपिंग वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें ठीक एक है। अच्छा, लिमिट एटीएम सेट। कार्ड, एटीएम कार्ड कैन बी यूज फॉर मेकिंग पेमेंट और नॉट? एटीएम कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर, कर सकते हैं। कर सर सक, कर सकते कर हैं। सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या, दोनों के अलग अलग नाम क्या है? एक का एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड है, दूसरे का क्रेडिट कार्ड है। सर क्रेडिट कार्ड की लिमिट सेट होती है कि उसके बाद फिर ऐसा लोन लेते हैं सर, हम बैंक पे करता है हमारे बिहाफ पे। ओके, सो now try to understand, ATM card is also can be used for making payments, but by using ATM card you can make payment up to the amount available in your account। समझ में आ रहा है? एटीएम कार्ड से कितना पेमेंट कर सकते हैं, जितना आपके अकाउंट में पैसा होगा उतना ही कर सकते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड यू कैन मेक पेमेंट not only equal to the amount available in your account, but अप टू द लिमिट ऑफ क्रेडिट कार्ड, है ना। तो जितना क्रेडिट कार्ड लिमिट है उतने का पेमेंट कर सकते हैं। आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तब भी आप पेमेंट कर सकते हैं। दैट पेमेंट विल बी मेड बाय बैंक, एंड दैट विल बी लोन फॉर यू, है ना। दैट इज द डिफरेंस। एटीएम कार्ड आल्सो कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट, बट इट कैन बी यूज्ड ओनली इफ यू हैव बैलेंस इन योर अकाउंट, एंड क्रेडिट कार्ड कैन बी यूज्ड इवन विदाउट एनी बैलेंस इन योर अकाउंट अप टू द लिमिट ऑफ द क्रेडिट कार्ड, ठीक है। जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो दैट मनी विल बी ट्रीटेड एज ए लोन अगेंस्ट यू, but debit card is not a loan that you are making payment out of your own money, that will reduce your bank balance, right Ram? Yes, sir. So nowadays a common word you use, plastic money, है ना। देखो आप याद करो हिस्ट्री ऑफ करेंसी, तो सबसे पहले कहाँ से आई थी, स्टार्ट हुई थी सॉल्ट और क्रॉन्चेज, आपने पढ़ा होगा कहीं इकोनॉमिक्स में। करेंसी का फॉर्मेट जो आया था सबसे पहले क्या चीज यूज थी, सॉल्ट का यूज किया और क्रॉन्चेज का यूज किया, फिर और कुछ चीजें आई, है ना। फिर सिल्वर करेंसी आई, मेटेलिक करेंसी, गोल्डन करेंसी, सिल्वर करेंसी, फिर लेदर करेंसी आई। एक टाइम ऐसा है जब लेदर करेंसी यूज की। उसके बाद आ गई फिर पेपर करेंसी। अभी हम कौन सा यूज कर रहे थे, पेपर, आज भी यूज कर रहे हैं पेपर करेंसी। और आजकल एक नया करेंसी फॉर्मेट आ गया, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, अरे अभी तो बताया था मैंने आपको, प्लास्टिक। प्लास्टिक करेंसी, प्लास्टिक मनी। So this is the plastic money, and what is that card made of? That card is made by plastic, so it is called now
plastic money. So these debit cards and credit cards are usually referred as the plastic money, you know. So these cards are used for making payment. In Western countries, they are very popular. In India also it is popularized. स्पेशली मोदी का जो मूवमेंट चलाया उसने फाइनेंशियल इंक्लूजन का, उसके बाद बहुत पॉपुलर हुआ. सो इन आवर कंट्री आल्सो वी आर, आवर अल्टीमेट टारगेट इज कैशलेस इकोनॉमी. ना क्या बनाना है हमको? कैशलेस इकोनॉमी बनाना है. कैश का यूज करने नहीं है. विदाउट कैश वी हैव टू मेक एवरी पेमेंट. सब्जी मंडी में भी जाएंगे तो कार्ड से पेमेंट करेंगे, जहां भी जाएंगे कार्ड पेमेंट होगा. दैट इज द फाइनल डेस्टिनेशन. But in India, it is difficult because of rural people, illiterate people, unaware of the banking system, lack of banking facilities. So till now, it is not very possible. But we have achieved one target, that is less cash economy. No? We could not yet make it a cashless economy, but we are definitely able to make it a less cash economy. अब हम कैश का यूज कम करते हैं. देखते होंगे बहुत सारे लोग कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं. So that is the example of less cash economy. Use of cash has been substantially reduced. That we are able to achieve. And most important role in making that less cash economy is played by these debit cards and credit cards, है ना. So ATM card means debit card and credit cards are used to make payments, and ATM cards are also used to withdraw money from your bank account. Sairam, so that is all. We will continue with this topic. One or two classes that banking will be over, then we will discuss insurance, insurance services. So now if you want to ask anything you can ask, otherwise you can leave.